Hello friends, welcome Urja Lab Ideas to Innovation. Today's topic is Introduction of Semiconductor. So today's lecture we have seen the different types of semiconductor material. So types of semiconductor. Semiconductor are classified as intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. So these are the basically two types of semiconductor material, intrinsics and extrinsics. Let's, what is this semiconductor? Semiconductor is a material which act as a insulator as well as act as a conductor. So that's why it is called as a semiconductor. Let's start with the first semiconductor material, intrinsic semiconductor. It is a pure form of semiconductor material available in nature. ये ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो हमारे नेचर में पहले से अवेलेबल है. जैसे हमारे नेचर में हमको सम metals available है, some kind of insulator available है. Metals act as a conductor, then insulator act as a your wood, rubber, it will be act as a insulator. So some kind of a pure form of semiconductor material available in a nature, like as a silicon and germanium are the pure form of semiconductor material. In intrinsic semiconductor, electrons and hole concentration is always equal irrespective of device temperature. Electrons and hole concentration is always equal in a semiconductor material, irrespective of device temperature. So let's start with the silicon bond की silicon material लेते हैं, जिसमें कि silicon material में there are the 4 electrons in a last orbit. 4 electrons in a last orbit. So these 4 electrons is bonded with the another atoms and it create the structure like this. So this is the complete structure of a silicon atoms with each electrons out last orbit electrons is a free and it will be bonded with another material. So this is the pure form of semiconductor material. Silicon and germanium, these are the two material available in a nature जो हमारे पास pure form of semiconductor material है. Then the next is extrinsic semiconductor. So what do you mean by the extrinsic semiconductor? To change the property of original semiconductor, another substance impurity is added to an intrinsic semiconductor, hence newly formed material is called as extrinsic semiconductor. हमारे पास जो अवेलेबल प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल है, यदि मैं उसमें कुछ अनदर सब्सटेंस या उसको हम कहेंगे इम्प्योरिटीज, वो यदि मैं उसमें ऐड कर देता हूँ तो दैट न्यूली मटेरियल जो हम ऐड करने के बाद जो हमारे पास जो मटेरियल अवेलेबल होगा, दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज अ extrinsic semiconductor. It is not a pure form, it having the some kind of a impurities. So which type of impurity we are adding, according to that, depending on the types of impurity, extrinsic semiconductor are classified into the two types. हम क्या impurity उसमें ऐड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम दो टाइप्स में उसको डिफाइन कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड सेकेंड वन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर. So let's start with the p-type semiconductor. Which type of impurity we are added to the in a pure form of semiconductor, then we get a p-type of semiconductor material. Which type of impurity added with the pure form of semiconductor material? So we are getting the n-type of impurity. ये चीजें हमको देखनी है कि p-type हमको कब मिलेगा और n-type हमको कब मिलेगा. So let's start p-type semiconductor. So consider the silicon atom, जिसमें हमारे लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है एंड वी आर एडिंग द बोरॉन जिसमें कि लास्ट ऑर्बिट में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, 1 2 3 एंड इन वन ऑर्बिट यदि मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन करता हूँ तो देयर इज अ वन गैप. सो यहाँ पर यदि मैं इन दोनों को यदि कंबाइन करता हूँ, दिस इज द सिलिकॉन एंड वी आर एडेड विद द बोरॉन. सो व्हाट हैपेंड, देयर इज अ वन प्लेस this covalent bond is packed, this covalent bond is packed, this covalent bond is packed. But what about this covalent bond? This covalent bond is not packed because this is the holes. What do you mean by holes? It is nothing but the absence of electrons. So while adding the boron material with silicon, it creates a p-type semiconductor. P-type means it having the holes as a majority charge carrier. So
the trivalent impurity atoms such as boron is added to intrinsic semiconductor, all the 3 electrons of boron atom will form a covalent bond with the neighbor atoms, whereas the fourth covalent bond will remain unfulfilled. यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि हम इस बोरॉन एटम की बात करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके अदर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड में फिट हो गए, बट आपका ये एक जगह जो है ये आपका यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं फिट हुआ है, ये अनफुलफिल है. सो इन दैट केस दिस पी टाइप मटेरियल is having the positive polarity, or you can say it having the more positive because of the presence of these holes. Presence of holes is nothing but absence of electrons. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड फ्री है, और वहाँ पे क्या जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इस कोवेलेंट बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए. सो यदि हम इसको बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन दे देते तो वो इसको पैक करेगा and that covalent bond get filled. That's why the p-type semiconductor material is called as acceptor impurities. It is considered as a acceptor impurities. तो यहाँ पर आपका p-type material कब create हो रहा है, when you are added the boron material with a silicon with a trivalent impurity. With a trivalent impurity. Trivalent means there is only 3 electrons in a last orbit. So it create the p-type semiconductor material. सो कंसिडर्ड कि आपने यहाँ पर बोरॉन और सेमीकंडक्टर को आप मिक्स कर रहे हो. सो व्हाट हैपन, दिस 3 इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड विद दिस सिलिकॉन एटम्स एंड दिस 1 इलेक्ट्रॉन 1 holes is free, this holes is free, so it considered as a acceptor impurity. It considered as a acceptor impurity. This having the majority charge carrier as a holes and minority charge carrier as a electrons. P-type semiconductor material having the majority charge carrier is holes and electrons having in a minority charge carrier in a p-type semiconductor material. Then the next, n-type semiconductor. N-type semiconductor, again we are taking the one kind of one pure form of silicon material having the 4 electrons. Then we are adding the phosphorus. So phosphorus having the 5 electron in a last orbit, 5 electron in a last orbit. So when this phosphorus atom is coincide or bonded with this silicon atom, so what happened, these are the silicon atoms bonded with a phosphorus atom. So 4 electrons of phosphorus is bonded with the silicon atom electrons. 4 electrons of phosphorus material is bonded with these 4 electrons of silicon, and the 5th electron is remain free. 5th remain is free. So when pentavalent impurity such as phosphorus is added to the intrinsic semiconductor, all 4 electrons phosphorus will be the covalent bond with the neighboring atoms, and whereas the 5th electron remains free, and it is called as n-type semiconductor. N-type means those having the negative charge, those having the negative charge in a majority carrier, those having the negative charge in a majority charge carrier. That's why it having the extra electrons, इनके पास एक extra electron है तो ये electron किसी और को दे सकते हैं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे सकते हैं. हम इसमें कुछ ऐसा मटेरियल ऐड करते हैं जिसमें एक उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वहां पर हम पी टाइप दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर इज एडेड. सो दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज डोनर इम्प्योरिटीज और डोनर सेमीकंडक्टर. ये क्या रहेगा, डोनर इम्प्योरिटीज, बिकॉज इट हैविंग द 1 फ्री इलेक्ट्रॉन. इनके पास एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए है तो इसको कहा जा रहा है इट इज free electrons, so it is called as the donor impurities. So when the pentavalent means there is a 5 electron in a last orbit is added with the silicon material, so 1 electron is free and other are in a covalent bonds. So what happened, these electrons are free in a space, and that's why it is called as n-type semiconductor material. So let's consider, so electrons
silicon material and phosphorus material is covalent bond with each other, and this electron is available in a free. So it is having the, in n-type semiconductor, electron having the majority charge carrier and holes having the minority charge carrier, holes or the minority charge carrier. So हम यदि बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक में, तो हमने क्या चीजें देखी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल है, that is the silicon and germanium. Last orbit is of 4 electrons. When extrinsic semiconductor is nothing but we are adding the some impurity in a pure form of semiconductor material and it create the extrinsic semiconductor material, that is called as the impure semiconductor material. So which type of impurity we are adding, हम किस टाइप की impurity उसमें ऐड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसके हम डिफरेंट टाइप्स बना रहे हैं. तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स है, पी टाइप एंड एन टाइप. जब हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में, देन देयर इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, बिकॉज हम उसमें फास्फोरस ऐड कर रहे हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, तो वहां हमको एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री मिल रहा है. और जब हम ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, तो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी में क्या हो रहा है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है. सो दैट हैविंग द absence of electron is nothing but a holes, and that holes having the positive charge carrier. So यहाँ पर हम उसको p टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कह रहे हैं जहाँ होल्स ज़्यादा है. तो यदि हम p टाइप मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करते हैं, तो p टाइप having the trivalent impurity, holes as a majority charge carrier, electrons in a minority charge carrier. In case of n type semiconductor material, electron is in majority charge carrier, holes is in minority charge carrier, and we are adding the pentavalent impurity, that is nothing but a phosphorus. So this is nothing but a semiconductor types. थैंक यू फॉर वॉचिंग. यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसको जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.